Hi students, we had completed the topic of abatement in my previous lecture. We had gone into the various aspects of abatement, right from what is abatement of a thing in section 107, and then to the various aspects of abatement, whether an act is completed or not completed, or an act is added to the abated act. All those aspects we saw, and finally we ended up our previous lecture with concealment, and we saw that was a law unto itself and we treated it in a different way. We have already gone through three basic aspects of common intention, criminal conspiracy, and the entire law of abatement. I'll be taking up the topic of common object much later. We now go on to the next important topic. We start a new, very, very important topic, general exceptions. General exceptions is given in a complete chapter. We have a complete chapter on general exceptions. Chapter 4 deals with the entire law of general exceptions from section 76 to 106. As a general rule, as a general principle, a man is presumed to know the nature and consequences of his act. Since I know the nature and consequences of my act, that is why I am liable for every act of mine. As a general rule, any act I do, I know what I am doing. And since I know what I am doing, I am liable, I am responsible for any consequences which follow from that act. This is a basic aspect. But there may be many instances where I am doing that act where I am not intending that act. B, I am unable to know the consequences of my act. How can I be unable to know the consequences of my act? I am not mature enough. I am a small child. Or I am unable to know the consequences of my act because I am a madman. I am a person of unsound mind. We have read a basic aspect in the Latin maxim. We have seen the principles of criminality. Actus non facit reum nisi mensit rea. Unless the requisite mens rea accompanies the actus reus, the transaction of offense will not be complete. I need to have the requisite mens rea. Persons are committing a lot of acts. Many times what happens is that I know not what I do, to quote the Holy Bible. As Lord Jesus said, please forgive them, O God, because they know not what they do. This biblical line can be one of the aspects, basis of general exceptions. Oh God, please forgive them because they know not what they do. They know not what they do. They are excusable because they know not what they do. उनको नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं. तो जब मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, how can I be held liable for that act? An act
Against my will is not my act. An act which I don't know that this act has this consequences is not my act. Even if it's my act, I'm not liable for it. There can be many variations to this rule. The first variation, as I said, I know not what I do. I'm a small child. I'm a person of unsound mind. I was intoxicated involuntarily to the extent that I know not what I do. There was a mistake. I know not what I do. There was an accident. It is not intentional. I could not foresee. So basically, I will divide this whole topic of general exceptions into two broad parts. The first part is what I will call excusable. When I say excusable, it means I know not what I do. In other words, I am incapable of forming the requisite mens rea. I am incapable of forming the requisite guilty intention. ये पहला part है. But certain times, law allows me. Law justifies my act. Hangman, जल्लाद, उसका काम ही है मर्डर करना. वो भी अच्छी तरह रस्सी खींच खींच के देखता है, मर गया ना. सारे इंग्रेडिएंट्स मर्डर किए हैं, सेक्शन 300 के सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. But law allows him. Your entire topic of private defense. आपको पता है आप क्या कर रहे हो. ये वाली लाइन अप्लाई नहीं करेंगी कि they know not what they do. You know what you're doing. कोई आपको मर्डर करने आया, आपने गन अपनी उठा के उसको गोली मार दी सेल्फ डिफेंस में. आपको पता है आप क्या कर रहे हो. मैं ये नहीं कह सकता they know not what they do. You know what you do. Yet, law saves you, law allows you, law justifies your action. So second category of general exceptions will be now justifiable. So सारे general exceptions को मैं दो major parts में divide करता हूं. पहला excusable और दूसरा justifiable. So the entire gamut of general exceptions ranging from section 76 to 106 can be broadly divided into either excusable or justifiable general exceptions. The basic difference: in excusable, I know not what I do. In justifiable, I know what I do, but I'm allowed by law. Law does not now declare it to be an offense, even though it is an offense, but law allows that act. What is an offense? An act prohibited by law. If it is prohibited by law, and now if you do that act, it is now punishable by law. So I am not prohibiting that act, I am allowing that act, even though that act amounts to an offense for an other person in other conditions. So basically, law is justifying your act even though that act per se
not in these conditions. If you do that very act in conditions which are not covered by section 76 to 106, they would be prohibited by law and punishable by law. What do we mean by general exceptions? Exceptions, what to exceptions to what? Exceptions to criminality. Exceptions to my liability for that offense. Exceptions to these offenses. So what are the exceptions of my liability? When can I be accepted from being held accountable for being held liable for my act which otherwise falls in the definition of an offense? See, हम वर्ड यूज करते हैं एक्सेप्शंस, हम ये वर्ड यूज करते हैं प्रोवाइजो, हम वर्ड यूज करते हैं जनरल एक्सेप्शंस. प्रोवाइजो जो होता है वो सबसे छोटा होता है, एक सेक्शन का ही प्रोवाइजो, एक थॉट का प्रोवाइजो. दिस इज दिस प्रोवाइडेड इट इज नॉट सो. पूरे सेक्शन का अगर हम एक एक्सेप्शन बनाएं, एक पार्ट का हम प्रोवाइजो डाल सकते हैं. पूरे सेक्शन को अगर हम उसका प्रोवाइजो हो सकता है अगर वो एक थॉट से पूरा कनेक्टेड है, बट जहां हम पूरे सेक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं वहां एक्सेप्शन आ जाता है. और वो एक्सेप्शंस जो पूरी आईपीसी पे लागू होंगे उनको हम जनरल एक्सेप्शंस कहते हैं. प्रोवाइजो बेसिकली is a continuation of a thought. Continuation of a thought in a negative way. So and so, so and so, so and so, provided this is not done. But when I come to an exception, pura, murder, section 300, the 4 clauses. Now, पूरे मर्डर का एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 3. सो प्लीज रिमेंबर, अब एक्सेप्शन के अंदर प्रोवाइजो हो सकते हैं, जैसे कि एक्सेप्शन 1 में आएगा, हम देखेंगे सेक्शन 300 के, दैट इट इज नॉट मर्डर अगर मैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में कर रहा हूं, प्रोवाइडेड पब्लिक सर्वेंट ना हो वगैरह वगैरह. तीन प्रोवाइजोस. सो ऑलवेज रिमेंबर, एक ही जो इंटरनल थॉट चल रहा होता है उसी का एक नेगेटिव पार्ट अगर कोई हो, उसी पार्ट का, तो हम उसको प्रोवाइजो में ले आते हैं. अगर पूरा एक कट एंड राइट सेक्शन हो गया, अब उस पूरे सेक्शन को हमने एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्शन में ले आते हैं. और जब पूरी आईपीसी पे हमने वो एक्सेप्शंस लगाने हैं तो हम उनको जनरल एक्सेप्शंस कहेंगे. आई जस्ट सेड पूरी आईपीसी पे अगर लगाने हैं. मेरा क्वेश्चन अगला ये उठता है कि क्या जनरल एक्सेप्शंस अप्लाई ओनली टू आईपीसी, और कैन आई गिव द बेनिफिट ऑफ जनरल एक्सेप्शंस टू ऑल ऑफेंसेस? दिस इज माय नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये आपका इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है. डू जनरल एक्सेप्शंस अप्लाई टू स्पेशल एंड लोकल लॉज? इसके लिए हम चलते हैं सेक्शन 40 पैरा 2. सेक्शन 40 पैरा 2 खोल के देखिए क्या लिखा है. चैप्टर 4 applies to all special and local laws. So that means the benefit of general exceptions is available to each and every offense in India. So the benefit of general exceptions by virtue of section 40 para 2 applies to all offenses in India. Now, as a general rule, as I said,
Actus non facitum nisi mens rea. My act is not punishable if it is not accompanied with the requisite mens rea. We have seen that. Basically, these exceptions are available to each and every section. When I say this applies as the word general, general का मतलब क्या है? It applies to each and every section. Each and every section of each and every offense in India, including IPC. Now question arises, अगर each and every section को apply करेगा, तो हर section के साथ लिखो. If you are saying that it applies to each and every section, then write it. या फिर एक ऐसा section लिख दो जिसमें लिख दो कि ये जो पूरा चैप्टर है ये सारे sections को apply करेगा. See, if I'm saying that these are exceptions to each and every section of IPC, then either you write all these sections, all these general exceptions, सारे section 76 से 106 को हर section के साथ append करो, या तो ये करो, या फिर कोई section लिख दो कि जी general exceptions जो हम आपको दे रहे हैं 76 से 106 पे, all of them will be applicable to all the sections. हमें हर section के साथ लिखने की जरूरत नहीं है. हमने एक chapter अलग बना दिया है जिसको अब deemed apply किया गया है. Deemed application है to each and every section. क्या कोई ऐसा section है जो ये चीज कहता है that the entire general exceptions chapter will be applicable to each and every section? Section 6. Section 6. Let's go to section 6. Section 6 says, I'm so sorry, my IPC is in a tattered condition and the pages are all here and there, but anyways, I remember it. I don't have section 6, but you can read it now. Section 6 very clearly says that the entire chapter of general exceptions will apply to each and every section, each illustration, each aspect. छोटी सी छोटी चीज भी जो है आईपीसी की, उसको हम जनरल एक्सेप्शंस के साथ पढ़ेंगे. That means we are going to read general exceptions with each and every provision, each and every even illustration. कुछ भी अगर हम आईपीसी का पढ़ेंगे तो जनरल एक्सेप्शंस उस पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा. Now, what is the object of creating a new chapter? Instead of qualifying every offense with an exception, with so many exceptions, a complete chapter has been made to apply to the entire IPC, and one section has made the entire chapter applicable to each and every offense of IPC. इसके ऊपर we have a old case of Daljit Singh versus Emperor, 1937, Nagpur. Every definition of an offense, every penal provision, and every illustration of a definition under the penal code shall be construed subject to the provisions contained in this chapter. कोई भी अगर ऑफेंस की डेफिनेशन में आता है, कुछ भी, हर penal provision, हर इलस्ट्रेशन, कोई डेफिनेशन का, सबको हम इस पूरे चैप्टर के साथ पढ़ेंगे. I would like to quote the Macaulay. I would like to quote Macaulay, who has written in his draft IPC Note B. Note B in his draft IPC, Macaulay writes, "This chapter has been framed in order to obviate
Obviate matlab to do away with. This chapter has been framed in order to obviate the necessity of repeating in every penal clause a considerable number of limitations. It would obviously be inconvenient to repeat these exceptions several times in every section on every page. We have therefore placed them in a separate chapter and made them applicable through a single section, section 6. I hope everybody is clear कि क्यों अलग चैप्टर और वर्ड जनरल का मतलब क्या है, जनरल एक्सेप्शंस क्या है. Now, we have the question which came up was, does general exceptions apply to local and special laws? I quoted section 40 para 2 chapter 4 applies to special and local laws. इसके ऊपर भी we have Orissa High Court, King Emperor versus Tustipada Mandal, TUSTI, Tustipada PADA, King Emperor versus Tustipada Mandal, 1951, Orissa. This whole chapter applies to special and local acts also due to section 40 para 2. Supreme Court, Shankar Bhadolkar versus State of Maharashtra, 2004 Supreme Court. This whole chapter of general exceptions applies to every offense in India. This whole chapter, as I said, can be divided into excusable and justifiable exceptions. We will classify this entire chapter into 8 parts. मोटा मोटा अगर हम देखें सेक्शन 76 से लेकर 106 तक हम इनको 8 भागों में बांट सकते हैं. 8 टॉपिक्स मोर और लेस कवर्ड. पहला, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेक्शन 76-79. दूसरा, जुडिशियल एक्ट्स, प्रिविलेज्ड एक्ट्स, सेक्शन 77-78. तीसरा, एक्सीडेंट्स, सेक्शन 80. चौथा, नेसेसिटी, 81. पांचवा, incapability to commit an offense, 82-86. Acts done with consent, 87-90. Without consent, 92. Triviality, 95. Compulsion, 94. उसके बाद ट्रिवियलिटी 95 एंड प्राइवेट डिफेंस 96-106. ये इसी तरह से हम पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे. ये 8-9 भाग हैं, ऐसे बनता है. we have to study entire general chapter like this. Now, एक चीज before I start the entire chapter per se, मुझे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट यहां बतानी है. ये बेनिफिट्स हैं. मर्डर किया है वो बच जाएगा. क्या अनसाउंड माइंड का था जब उसने मर्डर किया? बच जाएगा. वो 7 साल से कम बच्चा है, उसने मर्डर कर दिया, बच जाएगा. एक्सक्यूजेबल है. ये बेनिफिट कौन मांगने वाला है? एक्यूज्ड. Who is going to claim the benefit of general exceptions? Naturally, the accused. Now the question arises. Who has to prove this aspect? Suppose there is a charge of murder against me and I want to claim the benefit of section 84 unsoundness of mind. कि सर जब मैंने मर्डर किया मैं पागल था. तो कौन मूव करेगा इसको? I will move.
प्रोसिक्यूशन थोड़ा कहेगा ये पागल था, फिर आप उसके खिलाफ केस ही क्यों लाए? तो पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट ये आता है कि बेनिफिट कौन देगा? पुलिस देगी क्या? नहीं। पुलिस अगर देगी तो सबको ही कोई ना कोई बेनिफिट देके चार्जशीट ही नहीं करेगी, कहेगी नहीं 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 ये तो पागल था जी, हमने चार्जशीट नहीं किया। इट मे ब्रीड करप्शन, इट मे ब्रीड सो मेनी प्रॉब्लम्स। सो इसका बेनिफिट तो देगा कोर्ट। आई विल हैव टू प्रूव कि मैं पागल था। आई हैव टू प्रूव। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, बर्डन ऑफ प्रूविंग किस पे है? और ये क्वेश्चन आपका मेंस का भी है, ये आपका प्रीलिम्स का भी है, और डेफिनेटली आपका ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। इसको मैं 105 एविडेंस एक्ट में आने वाला हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो उसके अंदर मैं ज्यादा डिटेल में बात करूंगा, बट इस टाइम पे भी बहुत रेलेवेंट है इस चीज को बात करना, इसको इंटरलिंक करना जरूरी है। बर्डन ऑफ प्रूविंग किस पे होगा? इसको मैं कहूंगा ओनस ऑफ प्रूफ। एक्चुअली एक बेसिक लॉ प्रिंसिपल है बर्डन ऑफ प्रूफ का, जूरिस्प्रूडेंस है, ही हु मूव्स द कोर्ट प्रूव्स हिज पॉइंट। ये एक बेसिक लॉ है, जो कोर्ट मूव करेगा वो प्रूव करेगा, बस सीधा बात। ही हु मूव्स द कोर्ट प्रूव्स हिज पॉइंट, जो कोर्ट मूव करेगा वो प्रूव करेगा। आई एम मूविंग द कोर्ट, मैं कह रहा हूं कि जी मैं पागल था उस टाइम पे, तो प्रूव भी मैं करूंगा। सो प्लीज रिमेंबर, जनरल एक्सेप्शंस को प्रूव करने का बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? एक्यूज्ड पे, बिकॉज एक्यूज इसका बेनिफिट मांग रहा है, प्रोसिक्यूशन नहीं मांग रहा है। प्रोसिक्यूशन तो आपको फांसी पे लटकाना चाहता है, आप अपने आप को बचाना चाहते हो। आप कह रहे हो आई वॉज एक्सरसाइजिंग माई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आई वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड, वगैरह वगैरह। So the burden of proving general exceptions is always on the accused. Now next question arises, what is the standard of proof? Ordinarily criminal law में क्या है standard of proof? Beyond reasonable doubt, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बट क्या हम प्रोसिक्यूशन को और एक्यूज्ड को एक ही तराजू में तोलें? Do I place them on equal scales? Is the accused not having a presumption in his favor? The presumption of innocence? So please remember, the accused is already having the benefit of a presumption in his favor that I am innocent. Hence, the standard of proofs of the prosecution and the accused have to be different. That is why the standard of proof, if I have to prove something as an accused, that means suppose I want to take the benefit of general exceptions. I have to not prove to the level, to the standard of beyond reasonable doubt. I have to prove it only to the level of preponderance of probability. जो स्टैंडर्ड सिविल लॉ का है वो मुझे प्रूव करना है। हां, जब मेरे इस चीज को प्रोसिक्यूशन तोड़ना चाहेगा, उसके ऊपर तो रीजनेबल डाउट का ही है। सो व्हेनेवर prosecution wants to prove anything, it has to be beyond reasonable doubt. Whenever the accused has to prove anything, it is only preponderance of probability, a standard lower than reasonable doubt. I hope everybody is clear on this very, very important aspect. जब हम सेक्शन 105 एविडेंस एक्ट में आएंगे तो इसी से डील करता है पूरा। मैं अभी उसकी बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो एविडेंस का मामला है, और अभी हम शैल प्रिज्यूम्स में आने ही वाले हैं, तो उसमें मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। सेक्शन 6 हमने पढ़ा। सेक्शन 6 ने
हमें एक बात कही कि पूरा चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस का सारे के सारे जितने भी हमारे सेक्शंस हैं उस पे अप्लाई होता है। इसमें से एक implication निकला. That implication came up before the Honorable Supreme Court कि सपोज मेरा एक बेनिफिट मैं ले सकता हूं जनरल एक्सेप्शंस का और मैंने नहीं लिया. लेट्स टेक अ केस. I am charged with murder, and while जब ट्रायल शुरू हो गया, पहला प्रोसिक्यूशन विटनेस आया, उसने कहा सर ये तो पागल है, हम जानते हैं पागल है तो. दूसरा आया, सर ये तो पागल है. उस दिन हमने देखा, हमने बोला तेरी शर्ट बड़ी अच्छी है, अपनी शर्ट उतार के खाने लग पड़ा कि अच्छी चीज है. तीसरा प्रोसिक्यूशन विटनेस आया, उसने कहा सर ये पागल है. Accused has not taken this defense. जो भी रीजन है, कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि वो एक्यूज को बताए that it appears that you can take the defense of insanity या जो भी है. तुम्हें ये बेनिफिट मिल सकता है जनरल एक्सेप्शंस का, ये हमारा हर सेक्शन में जुड़े हुए हैं और एज अ कोर्ट मेरी जिम्मेवारी है कि तुम्हें बताऊं ये तुम्हें बेनिफिट मिल सकता है, तुम लेना चाहोगे? डू यू वांट टू टेक दिस बेनिफिट? सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट दैट इन केस a defense under general exception lies and the accused has failed to take that benefit, it is the court which will remind him that you can take this benefit. Duty of the court. Why? क्योंकि हर सेक्शन में जुड़ा हुआ है. तो जब सेक्शन में जुड़ा हुआ है तो एज अ कोर्ट जिसने सच्चाई लानी है उसकी जिम्मेवारी है कि आपको बताए ये आप एक बेनिफिट ले सकते हो, क्यों नहीं ले रहे, आप ले लो, मैं आपको देने को तैयार हूं, चाहे प्रिजम्पशन उल्टा लूंगा, वो 105 में आएंगे एविडेंस एक्ट के. सो दैट इज व्हाट इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट. ये क्वेश्चन इंटरव्यू का क्वेश्चन है, आया भी हुआ है, 2-3 बार पूछा है. आप जज हो, जज की कुर्सी पे बैठे हो, एक केस आ गया जहां पे जनरल एक्सेप्शंस बनता है, एक्यूज ने बेनिफिट नहीं मांगा, क्या आपकी जिम्मेवारी है कि उसको आगाह करो कि ये तुम्हारा बेनिफिट है, तुम क्यों नहीं मांग रहे, तुम मांग सकते हो. यस, इट इज योर ड्यूटी. प्लीज नोट डाउन, देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स ऑन दिस. आई गिव यू जस्ट 1 or 2. मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1968 सुप्रीम कोर्ट. मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 सुप्रीम कोर्ट. रिजान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ RIZAN रिजान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2003 सुप्रीम कोर्ट. बहुत है. इसका व्हाट वाज हेल्ड इन दिस मैं डिक्टेट कर देता हूं, ये क्वेश्चन आएगा अगेन, ये किसी भी फॉर्म में आ जाएगा, ध्यान रखना है. ये बारीकियां हैं सेक्शन 6 की. Even though the burden of proving of a general exception is upon the accused, yet Section 6 IPC imposes a statutory duty on the court to consider whether the offense of the accused is covered under any general exception. Even if the accused has not taken the plea of any general exception specifically. So the burden of proving, the onus of proving
that an accused should get the benefit of any of the general exceptions if he claims is upon the accused. This burden of proving is of the level of only preponderance of probability, because the accused always has a presumption of innocence with him. As a general rule, the onus of proving the accused guilty is always on the prosecution, and it never shifts. But if the accused wants to claim the benefit of a general exception, then the burden of proving lies upon him. This burden of proving standard, of course, is preponderance of probability. I hope everybody is now clear about the basics, the introduction of this chapter. So I hope clear as may. Now that we are clear on this introduction, we'll now go on to chapter 4, general exceptions. See, when I say general exceptions, as I told you, there are two words, general and exceptions. Exceptions to my liability, exceptions to my criminality, exceptions to my liability in that offense. And these are general exceptions, means it applies to each and every offense of IPC, and by virtue of section 40 para 2, it applies also to all special and local laws which deal with offenses in India. तो स्तिपाड़ा मंडल मैंने आपको कोट किया था, which means कोई भी जो इंडिया में ऑफेंस है उस पे जनरल एक्सेप्शंस अप्लाई करेगा. Section 76 is the first section. Section 76 has two parts. Section 76 and 79 have to be read together. तो पहले हम पढ़ेंगे section 76 and 79. 76 and 79 के दो parts हैं. Each of these, section 76 and 79, can be bifurcated into two parts each. Pehla, nothing is an offense which is done by a person bound by law. 76. Pehla part, nothing is an offense done by a person bound by law. 79. Nothing is an offense done by a person justified by law. So nothing is an offense done by a person bound by law, 76. 79. Nothing is an offense done by a person justified by law. Second part. Nothing is an offense done by a person who, in good faith, under a mistake of fact and not a mistake of law, does an act which he believes himself to be bound by law. मैं रिपीट कर रहा हूं. दूसरा पार्ट. पहला पार्ट क्या है? Nothing is an offense done by a person bound by law. 79 में nothing is an offense done by a person justified by law. दूसरा पार्ट. अब दूसरा पार्ट डील करता है मिस्टेक से. Nothing is an offense done by a person who, by mistake of fact and not mistake of law, does an act which he believes to be bound by law. Similarly, nothing is an offense done by a person who, by mistake of fact and not mistake of law, believes himself to be
justified by law. मोटा मोटा क्या है ये? अब इनको एक एक करके पकड़ते हैं. फर्स्ट लेट्स गो टू सेक्शन 76. Nothing is an offense done by a person bound by law. Let's go to section 76. एक बार रीडिंग करते हैं, फिर आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं. Nothing is an offense which is done by a person who is, यहां काट दो, यहां से सीधा नीचे आ जाओ, bound by law to do it. So पहला point, nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. बाउंड बाय लॉ एक पूरा लॉ के दरवाजे खोलता है. व्हाट डू वी मीन बाय बाउंड बाय लॉ? लॉ मुझे ड्यूटी देता है. लॉ इम्पोजेज अ ड्यूटी ऑन मी. आई एम बाउंड बाय लॉ बिकॉज लॉ मुझे कहता है कि करो. अगर मैं नहीं करूंगा तो वो इलीगल ओमिशन माना जाएगा. The main question which arises, what do we mean by bound by law? इसको समझने के लिए इलस्ट्रेशन ए में चलते हैं. A soldier fires on a mob by the order of his superior officer in conformity with the commands of the law. A has committed no offense. इस इलस्ट्रेशन के अंदर से सारा लॉ निकल आता है. Let's understand this. A soldier fires on a mob. गोली चला रहा है, पुलिस फायरिंग कर रही है. By the order of his superior officer. Superior officer ने कहा फायर करो. अगर वो कहे मैं नहीं फायर करूंगा, I am punishable. I am bound by law to follow the orders of my superior officer. मैंने refuse कर दिया. Tomorrow I can be arrested for illegal omission. I can be dismissed from service. 1000 चीजें होंगी मेरे साथ. A soldier fires on the mob under the orders of a superior officer. I am bound by law. पर सपोज सुपीरियर ऑफिसर जो है गलत ऑर्डर दे रहा है. सुपीरियर ऑफिसर जो है वो ही इज लाइक जनरल डायर. बच्चे हैं यूनिवर्सिटी के, आ रहे हैं, वीसी आया कर रहे हैं, टीएसपी आ गया, थोड़ा क्रैक टाइप का है, एक दो पत्थर पड़े, एक पत्थर पड़ते उसने कहा फायर. निहत्ते बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं. क्या जस्टिफाइड है? इसका जवाब है अगले 4 वर्ड. लेट्स गो बैक टू दैट. इन कंफॉर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ. इन कंफॉर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. दैट मीन्स that order should be a lawful order. Now, what is a lawful order? Of course, depends from situation to situation. It's a question of fact. We cannot generalize. But generally speaking, we can say what is a lawful order. It should be a legal order. It should be an order which should be sustained by law. एक दारू का ठेकेदार है, उसकी बंदी है, थाने में वो पैसे पहुंचाता है हर महीने, ताकि उसकी हम जो नेफेरियस काम चल रहे हैं उनको ना रोकें. एसएचओ ने बुलाया, वो आ गया, वो भी दारू का ठेकेदार है, तगड़ा है, पैसे वाला है.
द एसएचओ ने उसको उसको बहुत डांट लगाई कि तेरा 5 तारीख हो गई, तूने पैसे क्यों नहीं दिए अभी तक। वो भी भड़क गया, उसने कहा दे देता हूं, 1 दिन 2 दिन लेट हो गया तो कौन सी मुसीबत आ गई। एसएचओ गर्म हो गया। एसएचओ ने कहा तूने रहना है कि नहीं, तेरा कल से ठेके बंद। उसने कहा तू कौन होता है ठेके बंद करने वाला, मैंने पूरी बोली लगा के आई एम पेइंग रेवेन्यू, हु आर यू। लड़ाई हो गई। लड़ाई होने पे एसएचओ ने बोला उसको, कांस्टेबल जो था, गोली मार दे इसको। गोली मार दी उसने। It is an order from a superior officer, but is it in conformity with the commands of the law? No. Now I am not supposed to follow the orders of my superior officer. I am not bound by law. I am not bound by law to follow an illegal order. I am not bound by law to follow an unlawful order. ये मामला आया एक बार एक जजमेंट में, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिव मंगल सिंह 1981 सुप्रीम कोर्ट। दिस मैटर केम अप। इसमें क्या हुआ था, पुलिस ऑफिसर्स क्यों, एक मॉब था, और बंगाल का मॉब कई बार बहुत वायलेंट हो जाता है। उन्होंने पत्थरबाजी कर रहे थे, पत्थर के बाद वो कुछ पेट्रोल बॉम्ब्स वगैरह फेंक रहे थे, गाड़ियों को आग लग गई, और उसके अंदर काफी लोग इंजर हो गए थे। एक एसीपी भी बहुत बुरी तरह इंजर हो गया था। जो डीसीपी मौके पे आया उसने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया, 2 लोग मर गए, काफी हाई तौबा मची। मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नाउ सेड, लोग मर रहे थे, गाड़ियों को आग लगाई हुई थी, 2 पुलिस वाले ग्रीवियसली हर्ट हो गए थे, एक तो ऑलमोस्ट मरने वाली हालत में हो गया था, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक रहे थे वो। What do you suppose, what do you expect the police to do? The police was bound by law to maintain law and order. And the firing which took place in commands of the DCP's order, in followance of the orders of the command of the DCP, it was a justified order also. So, no offense. It is perfectly fine. नेचुरली ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। कमांड्स ऑफ द लॉ बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है, बिकॉज ये जो वर्ड है इन कन्फॉर्मिटी, इट कन्फॉर्म्स टू व्हाट, द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, इट कन्फॉर्म्स टू द लीगैलिटी ऑफ द ऑर्डर, the judiciousness of an order. एक और केस आया था, और बड़ा, ये केस तो एग्जाम में भी, ये दोनों केस आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, सेम प्रोपोजिशंस में भी आए हुए हैं। एक और केस आया था, ये जो केस मैं अभी दूसरा वाला बता रहा हूं, दक्खी सिंह का, दक्खी सिंह वर्सेस स्टेट 1955 इलाहाबाद का केस है। इन दिस केस देयर वाज अ पुलिस ऑफिसर, he belonged to the RPF, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होती है जो प्रोटेक्ट करती है प्रॉपर्टी रेलवेज की। एक चोर था जो बहुत चोरियां कर रहा था, नाक में दम किया हुआ था, और नेचुरली ऊपर से रोज डांट पड़ रही थी कि क्या कर रहे हो, सोते रहते हो तुम। नेचुरली बहुत मुश्किल से ये चोर पकड़ा गया, और इसको अरेस्ट करने के बाद ही वॉज टेकिंग हिम टू द पुलिस स्टेशन। रास्ते में, जैसा कि नॉर्मली पिक्चरों में भी दिखाते हैं, चोर इसके हाथ से निकल गया। सामने से ट्रेन आ रही थी, इसको पुलिस वाले को लगा ये तो उस ट्रेन में चढ़ जाएगा, ट्रेन जा रही थी तेज, और ये तो भाग गया। तो उसने इस चोर पे गोली मार दी। अनफॉर्चुनेटली गोली उसके टांग में नहीं लगी, नेचुरली टॉर्सो में लगी, और वो मर गया। Now the question, he said, I was bound by law. Now the question to be decided was, is it in conformity with the commands of the law? कहां है इसका conformity with the commands of the law में, कहां जाएं? Section 46 CRPC,
सेक्शन 46 सीआरपीसी कहता है कि अरेस्ट करते वक्त आप फोर्स यूज कर सकते हो, बट डेथ नहीं कर सकते। हां, अगर ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट हो तब आप फोर्स यूज कर सकते हो, तब आप इवन फोर्स टू द एक्सटेंट ऑफ कॉजिंग डेथ कर सकते हो। चोर था, हिज ऑफेंस वाज नॉट पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट। It was not in conformity with the commands of the law. Held liable. So इसीलिए प्लीज रिमेंबर, ये जो वर्ड है हमारा अरेस्ट विद द बाउंड बाय लॉ, इन कन्फॉर्मिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इन कन्फॉर्मिटी विद द कमांड ऑफ द लॉ हमेशा एक बेसिक एस्पेक्ट है बाउंड बाय लॉ का। So whenever we say that I'm bound by law can be in the form of law itself, law simpliciter, law लिखता है, या it can be in the form of an order of a superior officer, जैसा कि हमने इलस्ट्रेशन में देखा। बट जब भी मैं कहता हूं कि मैंने ऑफेंस नहीं किया बिकॉज आई वॉज बाउंड बाय लॉ, अब हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। Am I bound by law? Am I justified by law? जुड़े हुए हैं। बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ ट्विन सिस्टर्स हैं। जहां मैं बाउंड बाय लॉ हूं वहां मैं जस्टिफाइड भी होना चाहिए। जहां वो पत्थर मार रहे थे, बच्चे आ रहे थे, पत्थर मार रहे हैं, पत्थर ही मार रहे हैं ना, कौन मर रहा है उसमें? Whether the situation so warrants कि मैं वो वाला ऑफेंस करूं और फिर मैं उसका बेनिफिट मांगूं कि जी मैंने तो कोई ऑफेंस नहीं किया। यहां पे मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बात करना चाहूंगा। हैदराबाद वाला इंसिडेंट। I don't want to discuss more about it. I mean, not in details. You know, there was a rape incident, a very unfortunate and a very ghastly case of a rape, and burnt that girl. And next day morning, those 4 accused had a encounter with the police. Now, where I am bound by law, I was bound by law to make the entire case file. मौके पे जाना जरूरी था हमें, मौके पे जाके सारा नेचुरली पूरा रिक्रिएट करना था, पूरा नक्शा, पूरा इंसिडेंट रिक्रिएट करना था। आई एम बाउंड बाय लॉ टू मेक द एंटायर फाइल, इन्वेस्टिगेशन फाइल। और मौके पे रिक्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है एक्यूज को मौके पे ले जाओ और उससे फिर सारी बात क्लियर तस्दीक कराओ, पता हो जाएगा। आई एम बाउंड बाय लॉ। Now, if the accused snatch my weapons and start firing at me, what do I do? I'm not only a policeman, I'm also a human being. I have my own right of self-defense. मेरा भी तो राइट है ना कि मेरी जान मत लो आप। ठीक है, जो मेरी आप गन छीन के ले गए, फाइन, मेरे पे बाद में इंक्वायरी होगी, हो सकता है मुझे इसके ऊपर सजा भी मिले, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी वो। पर वो तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का मामला है कि मेरे ऊपर, ठीक है, आपके हथियार कैसे ले लिए आपने, क्यों नहीं, यू नो वी हैव मेनी वेज ऑफ सिक्योरिंग आवर आर्म्स, वो आपने क्यों नहीं किया हुआ था? सो रहे थे, आपको पता नहीं था कि ये अक्यूज हैं, कैसे आपसे छीन के ले गए? ये सब चीजें इंक्वायरी की हैं। ये इंक्वायरी किस चीज की है? मेरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो ले गए और मेरे पे फायरिंग कर रहे हैं। अब जब फायरिंग कर रहे हैं तो क्या मैं फायरिंग करके खड़ूं, कहता रहूं कि मार लो यार, अब मैं क्या करूं, मेरी गन तो आप ले गए हो, कि मैं जवाबी फायर दूं? या आप मेरी ले गए हो, मेरे साथी है, उसके पास गन है, ही नेचुरली हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट मी एंड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। उसने फायर कर दिया, हमारा निशाना आपसे अच्छा था, अनफॉर्चुनेटली
आप ढेर हो गए. I'm justified by law. I'm bound by law. Nothing wrong. What's wrong in it? So that is why, please remember, wherever I'm bound by law, nothing is an offense where I'm bound by law. तो मैं अगर कोई काम कर रहा हूं जो मेरी लॉ कहता है कि आपने करना है, चाहे वो ऑफेंस है, where I am bound by law and I don't do my word, nothing is an offense which is done by a person who's bound by law. If he does not do what he is bound by law, he is now committing an offense. Example लेते हैं. वो जो राम रहीम का केस आया, राम रहीम का केस बहुत आउट ऑफ हैंड हो गया था. इट्स एन ओपन सीक्रेट. 144 लगाई हुई थी, 144 सीआरपीसी लगाई हुई थी. देयर वाज अ ब्लैटेंट वायलेशन. 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे, हजारों लोग इकट्ठे हो गए. दे स्टार्टेड सेटिंग फायर. They started not only setting fire to vehicles but also to many properties. Arson and looting started. The police, which was looking mutely as a silent spectator, were not doing their duty. When the first act of arson started, they should have then and then fired, because the matter was getting out of hand. Later on, the army was called and then firing took place and a lot of people died. I was bound by law I am bound by law to maintain law and order. If I will not maintain law and order, I am committing an offense. So please remember, when I am bound by law, if I do anything in consonance with my whatever I am bound by law, and provided I do not do anything illegal, provided it is in conformity with the commands of the law, no offense. On the flip side, and on the flop side, on the other side, if I am bound by law and I am not doing my duty, I am now committing what I call an illegal omission. Now that illegal omission is an offense by itself, and now various aspects where a public servant is supposed to do his duty, he is not doing, is punishable. I may even be punishable as an abettor. Aid कर रहा हूं आपको मैं चुप रह के. हम पढ़ चुके हैं पूरा लॉ. So बहुत सारे स्कोप आ जाते हैं. So please remember, we have read the first point. Nothing is an offense done by a person bound by law. Same चीज आती है section 79 में. Nothing is an offense done by a person justified by law. ये एक बहुत बड़ा टर्म है, justified by law. अगर लॉ मुझे जस्टिफाई करता है तो मेरा एक्ट कितना भी क्रिमिनल आपको क्या ना लगे, जितना भी लगे, इट इज नॉट एन ऑफेंस. एक केस आया था राज कपूर का, सत्यम शिवम सुंदरम बनाई थी उसने, राज कपूर वर्सेस लक्ष्मण, 1980 सुप्रीम कोर्ट. उसमें क्या हुआ कि नेचुरली वो सत्यम शिवम सुंदरम वाज लिटिल erotic type of a movie. It is alleged. A case was registered under 292 obscenity. मामला सुप्रीम कोर्ट ने, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मूवी वॉज पास बाय द सेंसर. सेंसर गवर्नमेंट बॉडी है, उन्होंने सोच समझ के इसको सर्टिफिकेट दिया.
जस्टिफाइड बाय लॉ था, नो ऑफेंस। जहां मैंने गोली चलाई, अभी जो हमने पहले एग्जांपल दिया, आई वॉज जस्टिफाइड बाय लॉ। जहां शिव मंगल में डीसीपी ने गोली का ऑर्डर दिया, ही वॉज जस्टिफाइड बाय लॉ। जस्टिफाइड बाय लॉ इज अ जीनस। अगर हम देखें, majority of general exceptions belong to this. What is right of private defense? Justified by law. पूरे सेक्शंस 96 से लेकर 106, ये सारे सेक्शंस क्या हैं? जस्टिफाइड बाय लॉ। तो प्राइवेट डिफेंस तो बाद की बात है। प्राइवेट डिफेंस की मदर क्या है? जस्टिफिकेशन बाय लॉ। It is justified by law. That is why justified by law is a genus. Whether it is compulsion, whether it is necessity, whether it is triviality, anything and everything justified by law. हर चीज इस तराजू में तोलनी है। Am I justified by law means does law allow me to do this act which ostensibly looks like an offense, which may be an offense in letter and spirit, but is it an offense? Am I liable? No, if I am justified by law. Now, when I say justified by law, if you see section 79, justified by law, जस्टिफाइड बाय द लॉ नहीं है, जस्टिफाइड बाय लॉ है। क्या मतलब है, इसका फर्क क्या है? जस्टिफाइड बाय लॉ मींस जस्टिफाइड बाय स्टैट्यूटरी लॉ। द लॉ मींस द लॉ एज अ ऑनर। द लॉ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। द लॉ ऑलवेज हैज द कॉनोटेशंस। किस चीज के कॉनोटेशन होते हैं द लॉ के? As a philosophy, law is a philosophy. इसीलिए the word is here is he is justified by statutory law. तो मुझे कौन सा, तो अगर मैं कहता हूं ये काम मैंने किया, ये ऑफेंस किया, पर मुझे लॉ अलाउ करता है, वो कहेगा कौन सा लॉ अलाउ करता है, दिखाओ। सर ये दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। उसने उसको मारा था, मैंने भी उसको मार दिया, भगवान का न्याय कहता है कि मैंने उसको मारना था। सर जस्टिफाइड बाय द लॉ है। बाय द लॉ नहीं था सर, ये तो लॉ था। मुझे लिखित में लॉ दिखाओ, कौन कहता है आपको, कहाँ अलाउड है कि वो उसको मार रहा था, आपने मार दिया? सर लिखा है, सेक्शन 97 में लिखा है, मैं मार सकता हूं जहां किसी और की जान खतरे में है। अब द लॉ नहीं, लॉ है। ये वर्ड्स का प्ले है, एक एक वर्ड का प्ले होता है जिसमें पूरा का पूरा लॉ हमारे नया निकल आता है। सो आई होप यू आर ऑल क्लियर। नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंड बाय लॉ। Nothing is an offense done by a person who is justified by law, not justified by the law. I've run out of time. I'll take it up from here next time. Thank you. God bless.